And also we are arranging the outsider, a real, we can say, the experienced person in a testing background, okay, who have a experience, and he is a part of the interview panel, correct? So we will organize those session, but before that you should have a ready, a partially, at least you should know something what kind of questions will ask, okay, you should have a familiar, okay, because जो भी person interview लेने आएंगे, okay, they will give us a time, right? They will provide dedicated time for us. So जो भी टाइम वो स्पेंड करेंगे वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, ओके, अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में उनसे अगर आप इंटरेक्ट करोगे और इंटरव्यू फेस करोगे और आपको अगर प्रॉपर नहीं आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, करेक्ट गाइस? होप सो Yes, यू sir. आर ऑल एग्री विथ मी, राइट? Yes, sir. Sir. Okay, so Yes, sir. first of all we all need to boost up, okay, आपको उस environment के साथ familiar होना है, okay, you should have to familiar with those environment, okay, once you guys are ready, so then we will proceed for the actual interview, or we can say actual mock interview, those guys who already taking in a we can say tester point of interview, okay. So we'll arrange those panel, but first of all you should have to make ready up to certain, we can say, level, okay, so that will help you. So guys, please be we can say serious, okay, and practice more. We already shared few documents with you, right, related to the question answers or the interview question which is asked frequently asking on a forum, okay, so please go through it. Yeah, let me share my screen. So I think you guys are asking for the project details, right? So I will share one project already shared on a group, right? One of the group, but let me share once again. Just give me a minute. Okay, my screen is visible. Are you able to view one notepad file, text file? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is a one project detail which I added. Okay. So if you seen, it's basically an e-commerce site, okay, which is developed by us from I think since two years it's working in Australia. Okay, and this is a link. Okay, let me share my whole screen. Okay, so guys, basically this is a e-commerce site, okay, which selling the, we can say, horse or horse related accessories basically, okay. So you can just go through this site, okay, don't open any accounts, okay, for a time being. You already are familiar with the Flipkart and Amazon, it's kind of same work which is going in the NGK Farrier Supplies, okay. So you can mention this project in your resume, and also I given some points, right? So whatever the exact roles responsibility of a tester for a e-commerce kind of a project, so I mentioned here, like a perform stress test on a various web application and ensure that it's a compatibility with the operating system, okay. So these are all the points.
So I just go one by one, and hope so there is any doubts you can just raise with me. So I will ask to Ganesh to guide on that specific point. Okay. And hope so, but all the point which is already covered by Ganesh. Okay. So if you seen that organized and tested web application on various platform, so the various platform, it means like a tab or in a mobile view, okay, in a laptop or computer view, or various screen, or we can say the resolution. Okay, so it whether it is there is any impact on a website or not in a design point of view or in a functionality point of view. Okay, then the various platform like the if you see in the it should work properly in Android as well as in a iOS platform. Like in Apple mobile also, it should work in a same manner. Okay, so that kind of testing which you perform, then you prepare the test cases according to the business requirement. Okay, so what exactly the requirement? So like if there is a login page, so it should take a proper username and password, right? And if it is a wrong, then you should show a proper kind of a validation on a screen, right? If you buy some product in a cart, so it should reflect in a cart. While you are doing a payment, it should reflect the same amount what exactly which shown on the product. Okay, so this kind of a requirement, and you already prepared the manual test cases, right, in Excel sheet format. So guys, is it clear, right? Hope so you're understanding what I'm trying to say, and which is already covered in the lectures or in the sessions. So anything you want to share with me till that? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So is it clear, guys, what I'm trying to say? Like what are the roles and responsibility of the tester? Can I go ahead? Yes, sir. Okay, great. Then develop the test cases and the test plans, prepared all test strategies. So it is a similar like this point, prepare the test cases. Okay, but I just trying to extend that point. Okay, so it will gives you the good impact on in your resume. It's a little bit similar, right? So to create the test cases, and it's the same. So model wise, you are creating a test cases, right? For the login module, then you can say for add to cart, then for product display and product details. Okay, then a feedback or the reviews of a product. Okay, so those all will come in this test cases. Okay, then coordinate with the project manager and developers. But obvious you are a tester, so it's a very you're playing a vital role. Like you have to connect with the project manager for your updates, right, for your project, what exactly the testing which is performed on an application, as well as whether it is failed or it is passed, or can we proceed to deploy in a production or in a live server, or we can say live production scenario, or still there is a few bugs which is a major or minor that you can coordinate with your project manager, as well as whatever the bugs or issue which is highlighted while performing a testing on a specific application. So you have to deal with the developer, right? You have to assign those kind of bugs to developer to resolve it, correct? So that's why you're doing a coordination with the project manager and the developer, correct? And all analyze or test conducted on various product and components. So it is similar to the web application, but I'm just trying to extend here on the various products. Products is nothing but the module, okay? Module and the components, correct? So it is a similar one like in a web application, correct? But I'm just trying to extend here. Then the assisted software developer and perform the troubleshoot on a process and identify bugs in a system. Okay, again, it is the kind of a same which I'm trying to explain here, but here you have to just give a brief details to the software developer, what exactly the issue, okay, what you troubleshoot, and how you can tackle that situation, correct? So those you are trying to assessment, you just have to guide the software developer accordingly. He will fix the issue or bug, correct? So that is I'm trying to explain here. Assisted software developer can perform troubleshoot on a process and identify the bugs in a system. Then the develop the reusable test scripts.
So hope so this is also clear, taken care by the Ganesh. Okay, reusable case script means, as I said, the login system, it will be the same for the most of the application. Okay, so the 70 to 80% script that you can reuse, correct? So that is a reusable model. Okay, and then plan the various improvements on a system according to the quality process and analyze the test program and uh, all defects. Okay, and identify the all defect. So as a tester, your roles and responsibility not only to identify only the bugs or issue. Okay, so how to make the system, how to make the web application more quality product, that is your responsibility. Okay, so you have to give some kind of suggestions, right? कि अगर हम ये वे से करते हैं so it will be beneficial or it will take a less time and the system will perform a faster, okay, compared to the earlier. Okay, so that kind of we can say suggestion that tester can provide. Okay, otherwise this module takes less time, or this module take a lots of time to execute or perform the testing, or basically to add or buy the products. Okay, so this kind of improvements which system required, you have to identify and explain onto the board. It means the we can say the platform where all developers, project manager and tester join. Okay, to discuss about the your product or a model. So these are the roles and responsibility. Okay, so anyone have any question, like whatever I explained, you didn't understand, or you need some more details, or any practical scenario which you are expecting? Yes, anyone? Hi, sir. Ravindra here. Yeah, hi Ravindra, tell me. Actually, I have mentioned two companies in my resume, two projects. Okay. And I want to put three plus year experience. Okay. So I have to Okay. mention two project, or one is sufficient for. See, this is a e-commerce project. Okay, that you can mention on your resume on primary level, and one more healthcare related, we can say the project which we will provide you till today evening. Okay, sir. Okay, so if you are extending your experience more than we can say 1.5 years, okay, then you can add the second healthcare project in your resume. Okay. Okay, but on remember that you should have to show the healthcare on a secondary basis. Okay. Okay, but right now you're working on this e-commerce project that you have to mention. The reason why I'm telling you, this is little bit simple to explain. Okay, sir. Correct? Yes, sir. Because you already done the lots of things to buy the product on Amazon or Flipkart or any e-commerce platform, right? So you know very well what are the kind of models or what you tested. You can, like whatever you purchase, you can say, yeah, I am tested that application, right? So you have a more confidence compared to the healthcare system. The healthcare system is little bit vast, okay, and might be at some level you will stuck to explain related to the healthcare, right? Correct, na? So Yes, sir. healthcare, and I just want to highlight one more thing. In healthcare, you just explain them like I worked on a report part or the history related to the patient. Okay, what is a IPD? What is a OPD? So this kind of things might be asked. Correct. Okay. So you should know what is IPD and OPD because you are already tested that application. But uh, as I just explained earlier, like you get a additional confidence while you are explaining the e-commerce, right? Because you know how, what is the sell and buy, correct? What is the discount, what is the offer, correct, na? So those are the, we can say the very frequently which we are the common keywords which we are using, right? A day-to-day life, correct, na? Yes, sir. Okay, so you will get an additional benefit. So on primary level, whenever you are explaining or adding a project, show them this is a current project, okay, on which you are working, and the healthcare is the past experience which I worked. Is it clear?
Yes, sir. Actually, I want to ask you one more thing. My previous organization, I left in 2017, December 2017. Okay. And currently, I'm working in WNS from last 4 years. So, how Okay. much experience I have to show in my resume? Uh, Ravi, that thing I explain you. okay, Okay. so I think Ravi, you are from evening batch, right? Yes, yes. Yeah. Okay, so don't worry, Ravi. So we already like taken the same kind of sessions for the morning batch. Okay, and we are just waiting for evening batch to complete the we can say the your sessions. Okay, so now we can say you already entered in the automation, right? Yes. So now it is a good time to connect with you guys and proceed as what we did for the morning batch. Okay, so that all things will covered as Prakash said. Okay. Okay, sir. Then it's Yeah. fine. Yeah. So trying to say you just focus what I'm trying to say right now related to the project part basically. Okay. So this is a e-commerce internet, or we can say publicly available project. Okay. You don't have to mention that, but just understand what I'm trying to say here. Okay. So this is a internet, means publicly available. So anyone can check this link, will copy and they will get the result, right? Correct. This one. So this is a publicly available and it is a e-commerce site. If you want, so you can just overview. I will just give an overview. So basically, NGK Ferrier Supplies is an Australian-based our we can say client. Okay, so he's selling the we can say the horse-related product. As you know, Australia is famous for the horse riding and the competition, the various competition which is held in Austria, right? So there is a we can say a dedicated crowd, okay, or a dedicated business who deals with the horse related products. Okay, so NGK Farrier is a one of them. So they sell the nails, okay, hooks, so various product if you seen. Okay, so those all which is related to make the tools basically. Okay, the horse related product, so they are selling those products, correct? So that's it, and the rest of the things are same like in Flipkart and Amazon. Nothing much more than in that. So just concentrate what exactly the NGK Ferriers deals. Okay, so that's it. And this is the internet public side. Okay, so I already explained the same kind of points which you have to mention in the roles and responsibility. Now I'm just covering the second point. The details I will provide you later, but the roles and responsibility will be the similar. But as I mentioned, like it's a healthcare project, correct? But you have to mention that is a intranet. So let me explain what is an intranet or what is an in-house basically. So intranet project, it means what? Okay. So in the market, it doesn't necessary कि सब चीजें आपको publicly available है. मतलब कि अगर इंटरनेट साइट है तो वो आपकी इन हाउस, मतलब कि सिर्फ वी कैन से आइसोलेटेड लेवल पे सिर्फ हॉस्पिटल के लिए यूज होती है या स्पेसिफिक लैन में ही वर्क होती है. अगर आप उसका जो भी आईपी या डोमेन रहेगा, अगर आप ट्राई करोगे एक्सेस करने का फ्रॉम पब्लिक साइट, मतलब जैसे मैं अभी घर से कर रहा हूँ तो इट इज अ पब्लिक, राइट? सो वो एक्सेस नहीं होगा. इट्स रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ we can say the access or authentication authorization level. Okay, so user can authenticate and we can validate the user and let them come into the application. Okay, so वो आपका जो रहेगा वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, जैसे अगर आपका आप यू वर्किंग इन अ कॉलेज वी कैन से एडमिन डिपार्टमेंट. सो जो कॉलेज की एक एडमिन साइट रहेगी वो आपको इंटरनल कॉलेज में ही ओपन होगी, वो आप बाहर से ओपन नहीं कर सकते फॉर दी सिक्योरिटी रीजन, कि कोई उसमें बाहर से कुछ अपलोड नहीं करना चाहिए. ओके, सो देयर इज नो एनी चेंज इन एप्लीकेशन. सो that's why they need it on a security basis to इंट्रानेट इट मींस इन हाउस, वो सिर्फ आपकी इंटरनल वर्क होगी. तो ये जो हेल्थ केयर हम एक्सप्लेन करेंगे दैट विल बी इंट्रानेट, वो सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर ही ओपन होगी एंड वॉट एवर द ऑपरेशन विच विल परफॉर्म, इट्स अ इन हाउस ऑपरेशंस. तो हेल्थ केयर में आपको मेन तो ओपीडी क्या होता है, ठीक है, आईपीडी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए. लाइक इट्स आउटडोर
पेशेंट, इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके, आउटडोर मतलब जो होता है कि हम जो नॉर्मली डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, ठीक है। सो यू विजिटेड डॉक्टर, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। यू विजिटेड अ डॉक्टर, ओके, डॉक्टर को आपने विजिट किया, मेक प्रोफाइल ऑफ पेशेंट, ठीक है, अपनी प्रोफाइल बनाई पेशेंट की। जैसे ही पेशेंट जो है डॉक्टर को विजिट करेगा, ओके, तो डॉक्टर विल ऐड प्रिस्क्रिप्शन and medicine, basically whatever the diagnosis, not okay. So those all will cover by doctor, okay, and then maintain patient history, okay, and few account reports, मतलब जो भी उनसे फीस कलेक्ट की गई, ओके, so वो मेंशन हो अकाउंट रिपोर्ट्स में होगा। अदरवाइज यू कैन ऐड लाइक इट्स द सेम लाइक अकाउंट ब्लड रिपोर्ट या जो भी रहेगा वो पूरा अकाउंट, अकाउंट एंड डायग्नोसिस रिपोर्ट्स, ठीक है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू कैन से, ओके। सो ओपीडी एंड आईपीडी, आईपीडी है तो फिर उसका एक अलग से फ्लो रहेगा, राइट। सो इट इज अ सिमिलर, सो होप सो यू वी नो लिटिल बिट अबाउट आईपीडी। अगर पेशेंट एडमिट होता है तो वो चार्जेस, बेड चार्जेस एंड ऑल विच विल बी टेकन केयर बाय द सॉफ्टवेयर सिस्टम, okay, so that you can mention in a healthcare project, okay, but don't go in a depth, might be you will stuck somewhere, okay. So instead of that, as I said, and mention that it is an intranet or in-house project if they ask you, okay. So it says in healthcare and you can mention the product as a healthcare product, yeah. So that is a one project. If I will provide you the more details about the healthcare, okay, and I will share this e-commerce related project on a on priority, okay. So you can just go through. I already explained what are the different kind of roles and responsibility you have to explain in an interview, okay. And hope so you're familiar with all what I explained you here, okay. So let me know if there is any surprise like you don't know. So if there is any kind of the issue, so we'll again try to explain you or try to guide you what exactly you have to explain in the interview, okay. But apart from that, you should have to prepare the technically whatever the questions they will ask in a interview, okay. So is that clear, guys? Yes. Hello? Yeah, any doubt? So like most of the guys required some project details, so is it helpful or you needed anything else? Helpful, sir. Yeah, anyone feeling sleepy? Okay, great. So let's go ahead now. We'll talk about the points which I already like Prakash mentioned in the groups. Okay, related to the resume. Okay. So guys, anyone want to share the screen and can you open the job portal from the morning batch so I can just give a clear or better idea. Anyone interested? Yes, sir. Okay, Ajinkya. So please go ahead. Please share your screen. Okay. It's in mobile. Anyone logged in through laptop or computer?
Okay, let it be explained on this mobile view. Okay, Ajinkya, can you just open your home profile? Uh, Click on that home. No, it is not showing in a proper way. Click on that view profile. Okay. Okay. So Ajinkya, see, it's related to the LinkedIn basically. So we'll go towards the LinkedIn related whatever the update which is required. Okay. So first of all, अगर आप LinkedIn में देखोगे, okay, so photo is missing, Ajinkya. So it is not a like a rocket science, but you have to add your photo and it should be a professional. Okay. तो आपका Okay, जो sir. फोटो रहेगा प्रोफेशनल होना चाहिए. प्रोफेशनल इन द सेंस लाइक इट शुड बी इन अ फॉर्मल. Okay. So Yes, sir. upload your proper photo. Okay, it will shows like it is not a fake profile. Okay. Okay, so add your proper professional in a we can say formal shirt photo. Okay, and then next as you added the okay company name and all, uh, just scroll below. Okay, so if you see in profile strength is intermediate. So photo is Okay. missing. This Okay, one. yeah. So complete it because see there is a various or we can say a multiple files which interviewer can cross through in a LinkedIn application. Okay, but जहाँ पे भी उनको प्रोफाइल 100% मिलेगी तो वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, राइट? Yes, sir. Correct. So try to add or upload whatever required. Okay, in a system. So it will help you a lot. Uh, then okay, what is the add section? Click on that Yes, sir. Yeah. add section. Where, sir? Add. Scroll up. Yeah. Add profile photo. Okay, add profile photo. Hiring. Share your hire factor qualified. Hiring share किया है sir. uh, ठीक है. सर हाइब्रिड मतलब क्या रहता है? कहाँ पे हाइब्रिड है? ये हाइब्रिड का मतलब क्या रहता है? तो कहाँ पे तीन एक बार ऑप्शन show करो. यहाँ पे. You can now choose hybrid as a workplace option. Okay, okay. So guys, see, अभी work from home चल रहा है, right? Currently. ओके. ऑन साइट वर्क फ्रॉम होम मतलब आप घर से बैठ के डेली काम कर सकते हो. सो दैट इज अ वर्क फ्रॉम होम. ऑन साइट मतलब कि आप ऑफिस जा रहे हो, उसे ऑन साइट बोलते हैं. और ठीक है. रिमोट बोले तो क्या और रहता देयर इज अ न्यू कंसेप्ट हाइब्रिड. है? एंड रिमोट सॉरी, यानी रिमोट. रिमोट इज अ वर्क फ्रॉम होम. रिमोट लोकेशन इज अ वर्क फ्रॉम होम. हाँ, there are three options, sir. Remote, hybrid, and on-site. Uh, या on सो आई jobs. एम टेलिंग यू रिमोट इज नथिंग बट दी वर्क फ्रॉम होम. Yes, sir. Remote location it means work from home. On site means you're working in an office environment. Okay. And third one is a hybrid. So hybrid is basically अगर वीक में 5 दिन है आप ऑफिस मतलब आपका ऑफिस का जब 5 days वर्किंग है तो 3 days जो है आपको ऑफिस में आके करना है. 2 days आपको रिमोट या तो फिर वर्क फ्रॉम होम करना है. इट्स द सेम. Okay, तो sir. इट इज अ मिक्सअप. या तो फिर आपको हफ्ते में अल्टरनेट आना है. एक तो एक हफ्ता आपको घर से करना है, एक हफ्ता आपको रिमोट वर्क फ्रॉम होम करना है. अंडरस्टूड? हाइब्रिड मींस. Yes, sir. Sir, अभी क्या चेक ओके. करने सो का? दैट इज अ ओके. सो इसमें जॉब टाइटल मिसिंग है. ओके. सो उसमें ऐड करो एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर. ठीक है. अगर आप ऑटोमेशन है तो आप ऑटोमेशन टेस्टर भी डाल सकते हो उसमें. ओके.
देन अगर आप लिंक्डइन के बारे में पूछोगे तो गाइज लिंक्डइन में एक लिंक्डइन जॉब सर्च करके है। ओके, जॉब लोकेशन का अगर आप वो देखोगे उसमें एक ऑप्शन था जॉब लोकेशन। सो उसमें अगर प्रायोरिटी दिया है तो आपको सिटी सिलेक्ट करना है, अदरवाइज वहाँ पे एनीवेयर करके ऑप्शन रहेगा। सो एनीवेयर इट मीन्स व्हाट, आपको कहीं पे भी चलेगा, वेदर इट इज इन बैंगलोर, मुंबई, पुणे। ओके, सो लाइक आपके लेवल पे आई वुड सजेस्ट खुद में कुछ एक लाइक नाउ या बाउंड्री लाइन मत डालो कि पुणे में होगा तो ही मैं करूंगा एंड ऑल। ओके, सो मेंशन देयर ओपन टू वर्क लाइक एनीवेयर इन इंडिया। ओके, उससे क्या होगा कि आपके जो भी चांसेस है दैट विल इंक्रीज, राइट? यू विल गेट अ मोर इंटरव्यू कॉल्स एंड ऑल। ओके सर। क्लियर है? हेलो सर। यस। ओके, इट्स रिलेटेड टू द यस। सर सैलरी पूछते हो naukri.com पे, उधर क्या डालने का? सैलरी मेंशन मत करो। ओके, करंट उससे से। कुछ ये नहीं होता है कि मतलब आपको कॉल नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओनली द थिंग आपको ये बताना है कि आपका जो नोटिस पीरियड है दैट इज अ 1 मंथ। 1 मंथ डालने का है क्या? यस यस, तो नोटिस वो पीरियड विल बी अ 1 मंथ। प्रकाश सर ने बोला था कि ओके, उनको एंड बोलने का कि प्रोजेक्ट एंड हुआ है, वो बोलने का है, तो वो बोल सकते हैं क्या? हाँ, हेलो सर। बट आपको ये तो बताना पड़ेगा राइट कि 1 मंथ नोटिस पीरियड है। कम हो जाएगा द नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल, वो पूछेंगे कि कुछ निगोशिएबल है, इज दैट एनी हाँ। निगोशिएबल विद द नोटिस पीरियड? एट दैट मोमेंट यू कैन टेल देम, राइट? So project is over, okay, and I can try to join immediately. Okay, I will have to discuss with the manager. Understood? ठीक है, अगर आप बोलोगे कि मैं कल ज्वाइन करूंगा तो ओके वो सर। बोलेगा ऐसे कैसा पॉसिबल है, यस। ऐसा कौन सा कंपनी है कि आप कल ज्वाइन कर रहे हो? ठीक है, सो अगर आप नीचे देखोगे बॉटम में जॉब्स करके एक पैनल है, लास्ट में बॉटम कॉर्नर जॉब्स। एंड सर अप्लाई करना पड़ता है क्या अपने को उसको? हाँ, ओपन। तो इसमें जो है जॉब्स में ये आप इसमें और कुछ फिल्टर है जो ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन में मेरा प्रोफाइल ही ओपन करता हूँ। ठीक है गाइस, try to use your laptops or computer system, okay, while you are dealing with we can say job portals and all. Okay, you will get the more we can say the proper view, okay, and get a more idea. Okay, let me open. Okay, I'm sharing my screen. Okay, is it visible? Yes, sir. Okay, Yes. so this is my profile. Okay, so whenever you want to search a job, okay, so let me go through one by one. First of all, my network. Okay, जितने भी आपके फ्रेंड्स है दोज आर ऑलरेडी वर्किंग इन आईटी सेक्टर। ओके, और अगर आपका मोबाइल के साथ लिंक है तो ऑलरेडी वो आपको सजेशंस दिखाएगा। ओके, सो काइंड ऑफ दिस थिंग्स ही विल शो यू द सजेशंस। ओके, सो जो जिसको अभी आप पहचान रहे हो, सो ट्राई टू ऐड देम इन अ कनेक्शन इन अ नेटवर्क। उससे आपका जो प्रोफाइल है वो उन जो जो बंदा अभी जैसे कि दिस इज अ पर्सन अरुण नायर, तो इन्होंने जहाँ जहाँ पे वर्क किया हुआ है और उस कंपनी के रिलेटेड जो जो एचआर और जो एचआर टीम है
उनके वहां तक आप रीच हो पाओगे, आपका रिज्यूम वहां तक रीच होगा. तो ट्राई टू ऐड इन योर नेटवर्क दोज ऑल पीपल्स हु वर्किंग इन IT सेक्टर, नॉट ओनली द टेस्टिंग. ओके, आई एम टेलिंग यू IT सेक्टर मतलब वो कोई भी हो, डेवलपर हो, ठीक है, देन BA हो, कुछ भी हो, बट ट्राई टू इंक्लूड इन योर कनेक्शन. आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हो, जैसे कि अगर ये मुझे अभी रिक्वेस्ट आए हुए जिसको मैं एक्सेप्ट करूंगा तो एक्सेप्टेड हो गए. आपको भेजना है तो आप उनको कनेक्ट करके उनको एज अ रिक्वेस्ट भेज सकते हो, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे. ओके, सो दीज आर ऑल थिंग्स यू हैव टू फॉलो. करेक्ट. फर्स्ट थिंग रिलेटेड टू द नेटवर्क. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. या. सो सेकंड थिंग, अभी आप इंटरेस्टेड हो कैप जेमिनी में. ओके, ओपन द पेज. कैप जेमिनी का जो आपको यहाँ पे पेज दिखेगा, ठीक है, क्लिक ऑन फॉलो. ठीक है, क्लिक ऑन फॉलो. तो उससे आपको कैप जेमिनी रिलेटेड जो भी पोस्ट है वो आना चालू हो जाएगा. उसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं जो आपके इसके रिलेटेड होते हैं, अब जॉब पोस्ट जो कैपजेमिनी के HR शेयर करते हैं. ठीक है, अगर आप देखोगे, अब मैंने ये कैपजेमिनी के पेज पे आ गया है, यहाँ पे फॉलो करके अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये मेरे यहाँ पे दिखना चालू होगा इसके पोस्ट. ठीक है, ये पोस्ट है जो कैपजेमिनी जो HR है उन्होंने डाले हुए हैं. ठीक है, सी गाइस, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट कैपजेमिनी का ओपन किया हुआ है. अगर आप उनका पोस्ट देखोगे, ये पोस्ट आपको दिखना चालू हो जाएगा आपके वॉल पे. ठीक है, तो जैसे कि ये प्रोफेशनल मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या जो भी है ये ऐड करते रहेंगे, राइट. तो आप यहाँ से उनको कनेक्ट हो सकते हो फॉर जॉब रिलेटेड. ओके, सो इसमें बाकी भी जो भी उनके एक्टिविटीज एंड ऑल होते हैं वो उसके वीडियोज रहते हैं, बट डेफिनेटली यू आर कनेक्टेड विद दोज कंपनी. ओके, एंड योर रिज्यूमे विल बी हाईलाइटेड इन देयर पोर्टल. ओके, सो ये आपको करना है. देन अगर आप जॉब स्पेसिफिक कंपनी के जॉब सेक्शन में जाते हो तो आपको उन्होंने अगर कोई जॉब पोस्ट की है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखने चालू हो जाते हैं. ओके, सो आप उसको ओपन करके देख सकते हो कि आपके रिलेटेड कुछ है या आपके मतलब जो टेस्टिंग के रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पे दिख रहे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो. जैसे अगर समझो ये टेस्टिंग के लिए तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो इसका जो भी प्रोसेस रहेगा इट विल रिडायरेक्ट टू द CG, वी कैन सी द पोर्टल, या आपको डिटेल्स फुलफिल करना होता है. ओके, सो यू कैन डू दैट. ओके, सो दिस इज बेसिकली LinkedIn related page, a specific company page. You can search multiple companies, you can follow them, you just click on follow. Okay, so that will help you. Okay guys, so this is related to the network and the profile of the companies. Okay, then jobs, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है इन LinkedIn. ओके, सो इफ यू सीन जॉब्स में आप माई जॉब्स, देन जॉब अलर्ट, आप जॉब अलर्ट कर सकते हो. तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ. इन जॉब अलर्ट्स, इफ यू क्लिक सर्च फॉर अ जॉब, ठीक है, सेट अलर्ट, मैनेज अलर्ट, ठीक है. तो यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली सेट करना है डेली जॉब, ईमेल एंड नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, गेट नोटिफाइड फॉर द सिमिलर जॉब. यस, ओके. सो आपके प्रोफाइल में जो आपने मेंशन किया उसके रिलेटेड जो भी जॉब्स रहेंगे आपको उसका मेल आएगा. ठीक है, या तो फिर नोटिफिकेशन आएगा. नोटिफिकेशन का जो विंडो है, एक मिनट, ये भी आपको एक फंक्शन दिखाता हूँ. ओके, देखो, बेस्ड ऑन योर जॉब अलर्ट्स एक्टिविटी एंड प्रोफाइल. ओके, उसके बेसिस पे अगर आप इसको ऑन करोगे तो ये आपको चालू हो जाएगा दिखना जॉब अलर्ट्स. जब भी आपको अलर्ट्स आएंगे आपको ये नोटिफिकेशन टैब में आएगा. ठीक है, see this is kind of message you will receive. Tech Mahindra is hiring, see this and other job recommendation. ठीक है, आप जब व्यू जॉब करोगे तो उसके रिलेटेड आपको जो भी जॉब्स है वो यहाँ पे दिखना चालू होगा गाइस. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन आपको ये इसमें स्किल असेसमेंट पे भी जाना है. ठीक है, स्किल असेसमेंट पे आप जो भी आपके टेक्नोलॉजी है उसके रिलेटेड स्किल असेसमेंट होता है. अगर आप देते हो तो आपको एक बैच मिलता है. ठीक है,
अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो ये असेसमेंट स्टार्ट होने के लिए बोल रहा है। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर इसको आपको बैच मिलता है, ओके, तो आपकी प्रोफाइल और ज्यादा हाईलाइट हो जाएगी टू दी HR पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो दीज आर दी लिंक्डइन बैचेस। तो अगर आप देखोगे 15 मिनट्स सिर्फ आपको 1.5 एक पर क्वेश्चन के लिए 15 मतलब 20 से 25 मिनट देना है आपको। अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो वो बैच आपके इसमें ऐड हो जाएगा, ओके, और आपकी प्रोफाइल हाईलाइट होगी। सो आर यू गाइज अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स एवर बिफोर? हैव यू हर्ड? Yes, sir. आपने कभी सुना था? हेलो, आई होप सो सब जागे हुए, राइट? Yes, sir. ओके, सो स्किल असेसमेंट आपको करना है गाइस। टेक यू गिव टाइम एंड जस्ट शेड्यूल दिस स्किल असेसमेंट। कुछ ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक बार दिया और आप फेल हो गए तो फिर से नहीं दे, आप इसको 100 टाइम्स दे सकते हो। ठीक है, और जिससे आपका बैचेस ऐड हो जाएंगे एंड वो आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो बाकी जो है इनके जो पेड सर्विस है तो आप इनको ज़्यादा ध्यान मत दो। ओके, बट जो भी मैंने आपको बताया स्किल असेसमेंट, जॉब अलर्ट्स, ये आप सेट कर दो तो आपको ये जैसे जॉब्स रहेंगे वो आना चालू हो जाएगा। रिकमेंडेशन आपको दिखना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो आपको ये इसका सब जो भी मैंने बताया वो आपको अपडेट करना है इसमें। ओके, देन आता हूँ मैं एक मिनट वर्क में। ठीक है, होम में जब आप प्रोफाइल बना रहे हो यहाँ पे स्किल्स करके है, टेक अ स्किल क्विज, और आप ऐड कर सकते हो। तो आपकी जो भी स्किल्स है, जो भी आपने रिज्यूमे में मेंशन किए हैं, वो आपको सब यहाँ पे ऐड करना है स्किल्स में। ठीक है, जो टूल्स पे आपने काम किया है वो टूल आप मेंशन कर सकते हो। जो भी आपने स्किल्स पे काम किया है वो आपको सब इसमें ऐड करना है एक एक करके। तो ये जो स्किल्स है, अब अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट इट्स शोइंग 45 स्किल्स विच आई हैव एडेड। ओके, सो ऐड देम एज मच एज पॉसिबल। जो आपको पता है रिलेटेड टू द टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो स्किल्स आपको इसमें ऐड करना है गाइस। ओके, इसके बेसिस पे डिपेंड ऑन योर स्किल्स, ओके, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस विच यू मेंशन, ओके, उसके ऊपर आपका जो भी प्रोफाइल्स या जो भी जॉब से रिलेटेड है वो आपको सर्च होके मिलेगा गाइस। ओके, so please add those skills which I shared you just now, okay, which will boost up your profile in a LinkedIn. Is that clear? Yes, sir. Okay, so guys, this is related to LinkedIn. So any questions anyone have related to the LinkedIn? No, sir. Okay, so let's move apart from LinkedIn what you can do. Okay. So there is a very strong tool, or it's a free tool which is given by the Google. So guys use that. So I just explained what exactly might be you guys are aware about that tool. Okay, so you are looking for a test engineer, right?
इट डिपेंड ऑन यू। आप मतलब सिटी डालना चाहते हो तो सिटी डालो, अदरवाइज आप जस्ट सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर जॉब्स इतना अगर आप सर्च करोगे, ठीक है। सो ये गूगल का क्राउलर से आए हुए जॉब्स हैं। ओके, सो क्लिक ऑन 100 more jobs, 100 plus more jobs. Okay, so this is a Google window now. Okay, बहुत यूजफुल वी कैन से टूल है जो गूगल ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। सो बेसिकली गूगल क्या कर रहा है, गूगल विल पेज all openings for the software test engineer. Okay, and they will show you here with the links, like ये LinkedIn में आपको ओपनिंग है, ये लिंक ये भी LinkedIn है, ये मॉन्स्टर इंडिया में है, ग्लासडोर में है, इंस्टा शेयर। सो वी हैव अ मल्टीपल जॉब पोर्टल्स प्लेटफॉर्म जिसमें पॉसिबल है गाइज आपको रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। अब ये मत सोचो कि आपने दो दो जॉब पोर्टल पे डाल दिया तो आपका हो जाएगा। जितने भी पोर्टल्स आपको दिख रहे हैं आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट, कि जैसे कि अगर आप देखोगे कभी पोस्ट डाली है वो भी उन्होंने दिखाया, 3 days ago, 3 days ago पोस्ट डाली हुई है, ये 5 hours ago, मतलब आज का ही है। सो जितना फ्रेश होगा उतना आपका चांसेस बढ़ जाएगा। ओके, अगर आप मैं इस पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो अप्लाई ऑन लिंक्डइन, तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा। आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि क्या उनको एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्यूए इंजीनियर है, क्यूए इज नथिंग बट दी टेस्टर, राइट, एज यू नो। So QA is a quality analyst tester. Okay, so this is the same kind of roles which are working on it, correct? So अगर आप जाते हो यहाँ पे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बेसिकली। ओके, so same like in the rest of the platform like in Glassdoor. Okay, so आप देखो इसमें उन्होंने क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, कितने साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपको लगता है दिस विल मैच विथ योर एक्सपीरियंस लेवल, सो यू कैन अप्लाई इट। ओके, आपको लाइक लोकेशन पे अगर कुछ रखना है तो आप लोकेशन का दे सकते हो उसको, बट एज आई सेड डोंट पुट एनी लाइक हर्डल्स ऑन अ लोकेशन। ओके, रेडी रहो, जहाँ पे भी आपको मूव करना है आपको जस्ट एक प्लेटफॉर्म बनाना है। ओके, सो वंस इट इज अचीव्ड देन यू कैन फ्लाई एनीवेयर वेयर you want. Okay, now it's your choice, but before that don't give any boundary, okay, for your we can say the job related current, we can say as a fresher, you're a fresher, right, or we can say as a 1 or 2 years experience you're showing. So wherever you get the chance you definitely approach there. Okay, don't wait कि मुझे पुणे में मिला तो ही मैं देखूंगा और अगर मुंबई में होगा तो ही मैं जाऊंगा। ओके, आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो जस्ट कॉन्संट्रेट ऑन दैट लेवल। ओके गाइस, आप सेम जैसे लिंक्डइन में होता है यहाँ पे भी अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अलर्ट्स क्लिक बनाते हो, ओके, तो जब भी कोई जॉब्स रिलेटेड टू द टेस्ट इंजीनियर आएगा, क्वालिटी इंजीनियर रिलेटेड आएगा, सो डेफिनेटली यू डायरेक्टली गेट द मेल, ओके, फ्रॉम गूगल, बिकॉज ये ऑलरेडी आपका अकाउंट के साथ कनेक्टेड है। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आप यहाँ पे जॉब्स फॉर फ्रेशर डालोगे तो माइट भी और थोड़ा हाईलाइट होके आएगा। ओके, सी हियर मैंने फ्रेशर डाला हुआ है। One will be working on manual testing, automation testing, web services. Okay, SQL methodologies क्या होते हैं, involved testing in web app, desktop app. Okay, so Java and JavaScript. So you are familiar, right? So आप ऐसे जगह पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब ये साइट से जो हमने कभी सुनी नहीं है, इंस्पिरो, इंटेलीजॉब्स, ओके, बट डजेंट मैटर, हमें स्टार्टअप चाहिए। सो आप ये साइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसमें सेम चीज़ आपको पूछा जाएगा, रिज्यूमे एंड ऑल, जो आपको वहाँ पे देना है। ओके, सो दिस इज अ गुड टूल विच इज गिवन बाय द गूगल क्राउलर। ओके, सो ये पूरे साइट्स में से डेटा कलेक्ट करके लेके आता है और आप इसमें इजीली आपका फिल्ट्रेशन लगा सकते हो। ओके, और इफ यू वांट यू कैन मेंशन हियर फॉर 1 year एक्सपीरियंस,
आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो. Okay guys. So is it clear? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay. Let me show you any one of job portal, Monster or something. See guys, तो now Amazon का भी है, Amazon Jobs करके प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है. ठीक है. So you guys should aware about this kind of platforms जहाँ पे आप उस आपके फिल्टर ऐड कर दो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देन IT operations. Software testing associate, quality services, quality assurance is nothing but the testing only. Okay. So you can go with that. It's like managing automation tester experience, managing manual tester experience, 1 year of experience. Okay. So you can use that kind of portals, job portals. Monster, then another one is. Actually. Okay. Then next time job मैंने just एक पोर्टल कनेक्ट किया हुआ है. ओके. सो गाइस इसमें सेम जैसे मैंने आपको बताया, स्किल्स आप जितने भी ऐड करोगे दैट विल बी हेल्पफुल. ओके. क्योंकि ये स्किल्स जो होता है ना, इट इज नथिंग बट द कीवर्ड जिसके बेसिस पे इंटरव्यूअर सर्च करता है कि जो उन्हें चाहिए वो आपके पास है या नहीं. बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक का रिज्यूम ओपन करके देखेंगे. करेक्ट. उनके पास इतना टाइम नहीं कि हर एक का रिज्यूम ओपन करके चेक करेंगे कि उसने क्या मेंशन किया है. So that's why I would request you to add a key skills more as possible as जो भी आपने जिस टूल पे या जिस लैंग्वेजेस पे वर्क किया है, जो आपको सिखाया गया है. Okay, so that will be the keyword to find out the HR recruiter person. Okay, that you are we can say the right candidate to work on a testing as a test engineer. Okay, so that is a one thing. And apart from that, main as I just want to explain related to the where exactly it is. So it is not I just want to find out. Okay, I will just give you the proper, we can say the window where we are mentioning the your notice period. So आपको जो notice period है वो आपको 1 month डालना है. Okay, so उसके लिए क्या होता है कि ना most of the thing HR recruiter जो करते हैं. Okay, they want the immediate joiners.
या आप उसमें 15 डेज भी मेंशन कर सकते हो या 1 मंथ, दोनों में से एक आपको वहाँ पे मेंशन करना है. ओके, सो विच विल हेल्प यू टू शॉर्टलिस्ट योर प्रोफाइल. और एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द जॉब पोर्टल्स रिलेटेड. जॉब पोर्टल्स में ये बात आपको बाहर कोई नहीं बताएगा मार्केट में. गाइज प्रोसेस ये होता है कि मॉर्निंग में आपको 9 बजे 9 to 11 के बीच में जितने भी पर का ER कर दिया और सेव कर दिया, तो आपकी जो प्रोफाइल है ना लास्ट अपडेटेड दिखाएगी. जैसे भी मेरी प्रोफाइल 23 अप्रैल दिखा रही है, राइट, 21. सो ये जो है ना ये बहुत लास्ट पेज पे चली गई है. ओके, एज ए HR रिक्रूटर अगर वो आते हैं जॉब के लिए और अगर वो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट का सोचते हैं तो मेरा तो रिज्यूमे उनको दिखेगा ही नहीं, बिकॉज लास्ट अपडेटेड जो है 2021 है. मतलब 1000+1 के पेजेस में कहीं तो मेरा नाम रहेगा. करेक्ट. सो उनको दिन भर में मैक्स टू मैक्स वो 100 लोगों को कॉल कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, राइट. 100 भी बहुत ज्यादा हो गए, उनसे बात करना, उनसे डिस्कस करना ये नहीं होता है. तो उसमें क्या है ना, जो भी उनके पास शीट रहेगी उसमें तो फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही वो चेक कर पाएंगे. अगर सिंपल चीज बोलता हूँ मैं, अभी मैंने ये सर्च किया है, समझो अभी ये जॉब पोर्टल है जो HR रिक्रूटर हैंडल कर रहे हैं, उनको वैसे देखा जाए तो 1 to 9 या जो भी रहेगा उतने रिजल्ट्स दिख रहे हैं. पर हम कभी जाते हैं क्या 8 और 9 पेज पे रिजल्ट देखने के लिए? प्रैक्टिकली गाइस, इज इट पॉसिबल? हेलो. No, sir. ओके, सो गाइस जो HR रिक्रूटर है वो मैक्स टू मैक्स दे विल सर्व ऑन फर्स्ट एंड सेकंड पेज, नॉट मोर देन दैट. Okay, so each and every day without fail, I'm just repeating the same sentence because there is some reason. Update your profile between morning 9 to 10 और 9 to 11. उससे क्या होगा, जो प्रोफाइल है वो शफल होके उसमें आज की अपडेटेड डेट आएगी और आपकी जो प्रोफाइल है वो फर्स्ट और सेकंड पेज पे रहेगी. विद द हेल्प ऑफ दैट जो HR रिक्रूटर रहेगा वो आपको कॉल करेगा. करेक्ट. अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? एंड इज इट यूजफुल फॉर ऑल गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, ये आपको बाहर कोई नहीं बताएगा गाइस. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट उसके पहले जैसे मैंने बताया आपके स्किल्स अपडेट होने चाहिए. यहाँ पे जो भी आपने किया हुआ है आप पूरा इसको अपडेट करो, ताकि समझो अगर कोई HR रिक्रूटर है उसने ये मेरी प्रोफाइल ओपन की जो उसके फर्स्ट एंड सेकंड पेज पे दिख रही है, तो जब वो देखेगा तो स्किल्स एंड ऑल जो भी उन पूछा गया है उसमें अगर वो उसे प्रॉपर लगा तो उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बंदा कर लेगा. ठीक है. सो वी नीड टू फुलफिल ऑल डिटेल्स which is required by the job portals. Clear है? Yes, sir. Okay, so Yes. guys, these are the things like LinkedIn, as I said, the second which is related to this Google jobs, okay, that you can use. And the third one is the job portals, which have various job portals where you have to register, give a proper data. Okay, so HR recruiter will attract and update your resume in the morning, as I said, without fail. Whatever, do the small changes and update your resume or sorry, update your profile. It will gives you the on the top level, okay, the first or second page, and that will helpful for you. Yeah, so just follow these kind of things and definitely you will see the change. Okay, you will get the calls. Now the main thing, कॉल तो आ जाएंगे. ओके, मैंने जैसे अभी मॉर्निंग के बैच में बहुत सारे रिज्यूमे प्रिपेयर करते समय मैंने फेस टू फेस सेशन लिया, राइट. सो एज आई सीन guys are little bit we can say worried or just afraid, okay, कि कैसे इंटरव्यू देंगे, ये फिर 2 साल नहीं 1 ही साल दिखाता हो. ठीक है. सो गाइस, कॉन्फिडेंस बिल्टअप आपको खुद में ही करना है. ठीक है, हम कितना भी चाहे तो बिल्टअप नहीं होगा. आपको ये सब चीजें आ रही है, सो मेक अ पॉजिटिव.
ओके ना, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू होता भी है, मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे इंटरव्यू प्रिपेयर्ड, मतलब सब होता है, इंटरव्यू आपका सेट शेड्यूल होता है, और लोग जो है वो ज्वाइन ही नहीं करते इंटरव्यू को। क्यों? तो डर लग रहा है। सो गाइस, इंटरव्यू अगर आप देते तो दो ही चीजें होगी, क्या हो सकता है? एनी गेसेस? सेलेक्ट और रिजेक्ट। और कुछ होगा क्या इसके अलावा? थर्ड कुछ ऑप्शन है क्या? किस आपने कभी सुना है क्या इंटरव्यू दिया और क्रैक नहीं हुआ तो घर पे पुलिस आई? नहीं या किसी किसी के ऊपर मतलब कुछ एक क्या बोलते हैं, फाइल, केस फाइल हुई लॉयर के तरफ से, ऐसा हुआ? ऐसा कुछ हुआ है क्या? नो सर। सो डर किस बात का? दोनों में से एक ही चीज होने वाली है। ओके, एंड पॉजिटिव अगर आप रहोगे गाइस, सी, अगर मैं वर्स्ट केस में बोलता हूँ, समझो आपका नेक्स्ट फर्स्ट 5 इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो वो 5 इंटरव्यू में आप क्या सीखोगे? यस, टेल मी। How to prepare and what we need to prepare. ओके, गुड, What type of question interviewer will ask you will get Exactly. idea of. एग्जैक्टली, गुड पॉइंट। एनीवन एल्स? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। राइट, एग्जैक्टली। यस, एनीवन एल्स वांट टू ऐड समथिंग? कम्युनिकेशन करेक्ट, कम्युनिकेशन बढ़ेगा। एग्जैक्टली, सही पॉइंट है, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, राइट। अगर आपने कुछ गलती से बोल भी दिया, इंग्लिश रॉन्ग भी बोला, तो ऐसा होगा क्या वो बोलेंगे अरे तुमको 10th में 90 कैसे मिले? एक्चुअली वो नहीं मिलना चाहिए, कम होगा क्या आपका मार्क्स? नहीं होगा ना। सो गाइस, देयर इज ओनली 2 ऑप्शंस, राइट। एक तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे, या तो आप क्रैक कर लोगे और आगे बढ़ोगे। सो आपने खुद, सो यू ऑल गाइस आर स्मार्ट गाइस, सो आपने खुद ही सब आंसर्स दिए कि अगर आप वर्स्ट केस में आपका सिलेक्शन भी नहीं होता तो आपको क्या क्या एडिशनल पॉइंट्स मिल रहे हैं। सो दोज यू हैव टू मेक अ पॉजिटिवली। अब इसमें जस्ट ऐसे बोल के नहीं चलेगा कि जैसा अभी आपने पॉइंट्स बताए कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको समझेगा। सो गाइज, व्हाट यू हैव टू डू, अब इसको मैं और टचअप करता हूँ, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है, उसने आपको 20 क्वेश्चन पूछे और आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस के आंसर दिए, कॉल खत्म हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे? आप ये नहीं सोचते बैठोगे कि अरे मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, ठीक है, वो तो हो गया गाइस, जो होना था, क्योंकि आपका अभी ये स्टार्टअप है, आप अभी जस्ट फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ रहे हो। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, note down the all questions which is asked by the interviewer. I know that you're not able to recollect the 20 questions, but at least 12, 15, whatever question which is asked by the interviewer, you have to just note down those all questions and try to find out the answers, because that 15 questions, apart from out of that 15 questions, in the next interview they will ask you the 10 questions. Is it correct? And everyone agree with my statements? Yes, sir. यस सर। Okay, so it is a very small thing guys, but we are just ignoring that kind of things. Okay, आपको मार्केट में क्या पूछ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं हर 6 मंथ्स में एक इंटरव्यू देता हूँ मिनिमम। आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? तो मैं इंटरव्यू इसके लिए नहीं देता हूँ कि मुझे जॉब छोड़ना है, मैं इंटरव्यू इसके लिए देता हूँ कि मार्केट में क्या पूछा जा रहा है अभी, what kind of questions which is asked by the interviewer in a interview, वो आपको पता होना चाहिए, मार्केट में आप अपडेट रहना चाहिए। फॉर दैट रीजन यू हैव टू अटेंड द इंटरव्यू, ठीक है गाइस। सो आपको नहीं भी आता है तो आपको ये याद रखना है कि आपने आंसर नहीं दिया, ये नहीं याद रखना, आपको याद रखना कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, कि आपको बाद में नोट डाउन करने के लिए आसानी रहे। सो नोट डाउन द ऑल क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड बाय द इंटरव्यू एंड यू आर अनेबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो गए जो आपने आंसर दिए बट वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा उसके साथ, वो बोल रहा होगा कि और क्या है, और क्या होता है, नो I didn't get the proper answer what I'm expected. Okay, so try to go in a depth कि उसको और क्या एक्सपेक्टेशंस है और मैंने क्या नहीं बताया, एंड माइट बी दैट इज अ की पॉइंट जो आपने मिस कर दिया और आपने बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स बताए उससे रिलेटेड, ठीक है। सो नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, correct, so that is the one thing.
Second, as you already mentioned, that confidence built up. ठीक है, सो अगर आप 5 इंटरव्यू देते हो गाइस, तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं. अभी तो बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं, सो ट्राई टू वेयर अ फॉर्मल थिंग्स. ओके, स्टार्ट योर कैमरा. डोंट डू दैट कि मेरा कैमरा नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. ओके, उससे आपका इंप्रेशन है वो रॉन्ग होता है. ओके, तो स्टार्ट योर कैमरा. ओके, लेट हिम सी यू एंड आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करो. जितना हो सके आपको इंग्लिश में बात करना है. अगर आप ट्राई भी करते हो, ठीक है, तब भी वो इम्प्रेस होगा इंस्टेड ऑफ यू आर स्पीकिंग इन हिंदी और इन मराठी. ओके, so at least you have to try. You have whatever you're trying to say, explain him through the signs of hands. ठीक है, आप उसको वो वे से बताओ, नो वरीज. ओके, बट आपको एक्सप्लेन करना है whatever knowledge you have. करेक्ट. सो एज अ सीन लाइक बहुत सारे चीज लोग वैसे करते हैं कि मतलब इंटरव्यू शेड्यूल होता है, फिर बाद में वो डर जाते हैं कि अरे नहीं मुझसे नहीं होगा, वो इंटरव्यू नहीं देते. सो ऐसे वाइज तो आप मतलब जो सीढ़ियाँ चढ़नी वो चढ़ ही नहीं रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको हो जाएगा. ठीक है, सो वॉट एवर हार्ड वर्क विच यू ऑलरेडी डिड फ्रॉम लास्ट 3 months. ओके, सो ट्राई टू यूटिलाइज दोज ऑल थिंग्स. ओके, एंड guys, it is related to the career. Okay, and I already explained you, I am just repeating once again. अगर आपको करियर करना है तो आपको हार्ड वर्क करना है. और अगर आप हार्ड वर्क करके सब चीज़ें रिज्यूमे अपलोड करके जॉब पोर्टल्स में करके अगर आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, तो आप खुद को फंसा रहे हो. दैट्स इट. ठीक है, एवरीवन एग्री विथ माय स्टेटमेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, so don't attract with the figure. Okay, what amount you will get while you selected. So try to give your best कि उनको खुद से ही बोलना पड़े कि आपको कितना एक्सपेक्टेड है. ओके, सो आपके ये जो वी कैन से 1 or 2 weeks अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके आपको जब कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, वी ऑल्सो पब्लिश द ओपनिंग्स इन अ ग्रुप नाउ. ओके, सो ऑलरेडी द इन अ मॉर्निंग बैच वी अगर आप माइट बी देयर इज अ फ्यू गाइस फ्रॉम द इवनिंग और वो सोच रहे कि हमें तो अभी तक ये नहीं पता है. सो गाइस सी, फोकस इम्पोर्टेंट है. आपका ऑटोमेशन कंप्लीट होने तो उसके साथ साथ जो भी हम कर सकते हैं वो कवर करेंगे, बट डोंट डिवाइड योर फोकस. आपका फोकस प्रॉपर रखो, ऑटोमेशन प्रॉपरली कंप्लीट करो, उसके बाद में ये सब चीजें होगी. ओके, वी जस्ट एडेड यू कि आपको थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए कि आगे जाके हमें क्या क्या करना है. ठीक है, so for specifically morning batches we will post you the various, we can say, the job posting as well as a few reference HR or software developers mail ID to send them resume. Okay, so ये सब हमें करना है and उसके पहले आपको prepare रहना है. So that's why Prakash told you in the starting of the session today. Okay, कि आप internally एक दूसरे के साथ like इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू का प्रैक्टिस करो. सो वी विल गेट कॉन्फिडेंस और आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे. आप जब पूछोगे तो आपकी भी रिवाइज होगा और सामने वाला जो पर्सन है who will also get an idea what kind of questions which will ask and how to explain that. और उसके बाद जो मॉक इंटरव्यू which we already planned with the interview panel, those are a part of interview panel in the MNC's company. So they will conduct the interviews, and if there is any kind of we can say he feels like the kind of feedback, so they will share with you. That will definitely help you for preparing interview. Okay, so that's it guys. Anything else? Anybody want to ask something? Yes, team. गाइस, मीटिंग लेप नहीं करनी है. कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछो, उसके बाद मैं थोड़ा गाइड करने वाला हूँ आपको. कुछ डाउट है किसी को? और Hi, Sagar sir, Ravindra here. Yeah, hi Ravi, tell me. Yeah, our automation is already completed in last week. Means all syllabus are done. Evening Yeah. batch. Evening batch, yeah, I'm telling you now. So that's why I said we are just waiting to complete your syllabus. Okay. Yeah, it's already And- completed, sir. Yes, so I know. Okay, I have all idea. So I'm just telling you, completed, it means have you done the all practice sessions? No. Just syllabus No. is completed. Right. So Ravi, as we already explained in the
we can say chat or in the session as well. Okay, it doesn't mean कि हम यहाँ पे classes नहीं कर रहे, right? This is not for you. Okay, don't take it personally, but this is for all guys. So आपको प्रैक्टिस करना है गाइस, क्योंकि आप जब प्लेटफॉर्म में जाके बैठोगे इन ऑर्गेनाइजेशन, आपको वो चीज आनी चाहिए, बेसिक तो भी आना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए उस चीज का. ओके, सो डोंट थिंक लाइक कि हाँ हो गया, बिकॉज द सेम थिंग विच वी डिड फॉर द मॉर्निंग बैच एज वेल. ठीक है, आपको थोड़ा एक स्पेस दिया जाएगा, आपका मतलब जो भी लाइक अभी जो भी आपके सेशंस थे वो कंप्लीट, आपको थोड़ा खुद को टाइम स्पेस दिया जाएगा कि आप इसको थोड़ा देखो. उसके बाद यू हैव एनी doubts related to technical doubts, I'm telling you first of all, okay, that you can discuss with the trainer. Okay, trainer आपको फिर से explain करेंगे अगर आपको कुछ भी लग रहा है. Then we will proceed for the next step, what we are now telling to the morning batch. Okay, is that clear, Ravi? Yes, sir. Thank you. Okay, yeah, thanks, Ravi. So guys, I think that's it. Or anyone else have any questions? Yes. Yeah, Aparna, want to say something? Hello, sir. Akshay here. Yeah, Akshay. Sir, some companies demand only automation engineer and or a manual engineer. So we have to put. I put it there both experience. So is it? It means I will get call on that. Yeah, definitely, Akshay. So see, as already I mentioned, okay, so you have to show the on priority automation experience and below that a manual experience. Like you have to mention कि आपने सबसे पहले manual पे work किया. ठीक है, आपको अगर कॉन्फिडेंस है ऑटोमेशन का तो आप दिखाओ मैनुअल में मैंने 6 महीने ही काम किया है, उसके बाद में मैंने ऑटोमेशन चालू किया है. Okay. ठीक है, अगर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस है, बिकॉज अकॉर्डिंगली व्हाई आई एम सेइंग टेलिंग यू द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रैक्टिस, बिकॉज अकॉर्डिंगली योर इंटरव्यू क्वेश्चंस विल आस्क बाय टेक्निकल पर्सन, करेक्ट. वो ऑटोमेशन पे फोकस देगा. अगर आपको लग रहा है कि आप ऑटोमेशन में थोड़ा इनिशियल फेज में हो, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन शो कि 1 ईयर आपने मैनुअल किया है और अभी जस्ट रिसेंटली 6 मंथ्स और 3 मंथ्स से आप ऑटोमेशन पे वर्क चालू किया है. समझ रहे हो? Yes, sir. करेक्ट. तो ये आपको हेल्पफुल हो जाएगा, तो उसे समझ जाएगा कि ये बंदा मतलब इसे टेस्टिंग क्या है ये तो पता है, मैनुअल ये ऑलरेडी वर्कड ऑन. ओके, Okay. एंड इन Okay. एडिशन की जब उसे और मैं ऑटोमेशन के लिए काम करना है तो इसको थोड़ा बेसिक पता है, मुझे बेसिक से इसे बताने की जरूरत नहीं है. ओके, so Okay. that they will consider and accordingly they will ask you the question in an interview. Achha. Okay, sir. Okay, so this kind of a strategies guys. Okay, so try to understand. Aap see, I don't know each and everyone how they prepared for a manual and how they prepared for automation, but इस तरीके के strategies आपको इंटरव्यू में like we can say show करना है खुद को. आपको जिस पे ज्यादा फोकस करना है आप उसको, अगर आपको लग रहा है कि ऑटोमेशन नहीं मैनुअल ही करना है मुझे, तो आप मैनुअली सिर्फ रिप्रेजेंट करो रिज्यूमे में. बट Okay. एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी ध्यान रखना है, एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस, राइट. सो यू हैव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. अगर आप मैनुअल ज्यादा शो करते हो, ठीक है, तो मैनुअल में आपको उतना ट्रेंड अभी मार्केट में नहीं है. ठीक है, Okay. आपको थोड़ा सैलरी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा. और अगर आप ऑटोमेशन दिखाते और ऑटोमेशन का इंटरव्यू क्रैक करते तो आपको आगे जाके अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलेगी और पैकेज अच्छा रहेगा. ओके, सो ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है. अगर आपको मैनुअल इजीली मिल रहा है तो आप मैनुअल में भी जा सकते हो. इट्स अप टू यू. सो एज आई सेड ऑलरेडी, practice is very important. So if you have already did the good practice, then go ahead with the automation. But don't forget that कि automation आपको मतलब knowledge है या experience है आपको mention करना है as per the confidence level. हेलो सर. Yeah, Jinkya. Yeah, tell me. सर 100% ऑटोमेशन दिखा सकते हैं रिज्यूम में? Yes, as I mentioned, na, so you can show the 100% automation, no issues. Okay, but don't like manual पे भी work किया ये दिखाओ. Last starting में 3 months किया ऐसा दिखाओ. And now from last 1+ year you're working on automation, you can show. No worries. सर वो मैनुअल के टूल्स इतने समझ में नहीं आए मेरे, इसलिए. हाँ चलेगा ना. So 3 months is enough, right? So in a 3 months you just mention ना.
कि आपने जस्ट एक्सेल में टेस्ट केसेस बनाए, दैट्स इट। टेस्टिंग क्या होता है ये आपने मैनुअल में सीखा, ये आप बता सकते हो, दैट्स इट, बेसिक। ओके ओके, हॅलो सर. यस प्रसाद. सर प्रोजेक्टमध्ये आपण क्लायंट मेन्शन करावं लागतो का? म्हणजे आपण सांगतो ह्या कंपनीमध्ये काम करतोय, पण क्लायंट्स पण मेन्शन करायचं का रिझ्यूम मध्ये? इट्स नॉट नेसेसरी, सगळीकडे असंच नाही होत प्रसाद. सो बेसिकली नाउ द क्लायंट फॉर अस, as I said, NGK Farriers, it is a client for me, right? येस. Correct. So but client comes in a picture when you're working for the company and they have some vendors. Okay, in our case you directly represent that is a project name or a website name on which the e-commerce site on which I'm work, that's it. No need to mention the client. येस सर. वन मोर सर. सर आपण एक्सपिरियन्स दाखवतोय, मग सर ते विचारणार का आपल्याला स्टेटमेंट किंवा तुम्ही प्रिव्हियस सॅलरी कशी मिळायची तुम्हाला हे? That already Prakash will cover. Okay, don't worry about that. येस सर. थँक्यू. Okay, yes, anyone else? Okay guys, so hope so it is a good session for you guys, all guys, related to the resume and facing an interview. Okay, so please note down whatever we discuss related to the resume upload and all. Okay, and still if you have any questions you can ask on our chat, group chat, no worries. So it will help to the rest of the guys as well if they are like the similar kind of questions comes in a mind. Okay, but feel free to ask, don't hesitate. Okay, so that's it from my end. Thank you so much. Yes Prakash, you can go ahead now. थँक्यू Yes. सर. ठीक है गाइस, मैं क्या करता हूँ आपको वन बाय वन एक एक कॉल करके मैं कॉल करता हूँ आपको, और कॉल पे एक एक का डिसाइड करता हूँ कि क्या करने का। फर्स्ट हम लोग मॉर्निंग बैच का लेंगे, फिर इवनिंग का। और इवनिंग बैच को ऑलरेडी रवि गणेश सर ने ऑलरेडी आपको बोला है कि नेक्स्ट सैटरडे संडे आपका ये रहेगा, मॉक इंटरव्यूज रहेगा। ओके, तो आपको ये वीक पूरा प्रिपरेशन करना है, और नेक्स्ट सैटरडे संडे आपका इंटरव्यू होके फिर नेक्स्ट मंडे से हम लोग आपका रिज्यूम अपलोडिंग और आपका एक्चुअल इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग कल से मॉर्निंग बैच का, जो मॉर्निंग बैच वाले हैं उनका कल से स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट वीक से इवनिंग वालों का करेंगे। ओके, तो आपका एक बार मॉक इंटरव्यूज होने दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका। तब तक आपको एक वीक है, आप एक वीक पूरा प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। और अगर आपको प्रिपरेशन हो कुछ डाउट आ रहा होगा, कुछ पॉइंट नहीं समझा होगा, तो आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो, या तो आई थिंक सबके पास गणेश सर का नंबर होगा ही। आप डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप पे, कुछ लोग करते ही डायरेक्टली बंदे, कुछ उनको डायरेक्ट मैसेज करके उनसे सपोर्ट ले रहे हैं, तो आप डायरेक्टली ले सकते हो। टेक्निकल इंटरव्यू, टेक्निकल सपोर्ट्स या मैनुअल ऑटोमेशन रिलेटेड कुछ लगा तो आप गणेश सर से लो। फॉर डॉक्यूमेंट, फॉर इंटरव्यू कॉल्स, डॉक्यूमेंट्स इस रिलेटेड कुछ भी रहा, रिज्यूम में क्या मेंशन करना चाहिए, पैकेज ज्वाइनिंग सीटीसी क्या दिखानी चाहिए, करंट सीटीसी क्या दिखानी चाहिए, ओके, स्टार्ट डेट एंड डेट क्या दिखानी चाहिए, नोटिस पीरियड कैसे मेंशन करना चाहिए, पेरोल कंपनी, क्लाइंट कंपनी मेंशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं देखने वाला हूँ। तो आप इस सारी चीजों के लिए मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ओके, तो मैं एक एक से कॉल करता हूँ और फिर आपका एक एक का डिसाइड करता हूँ मॉर्निंग बैच वालों का, ठीक है guys? और जैसे मैंने बोला है आपको, जो जोड़ी आपको असाइन की है, आप एक बार दोनों भी जो जोड़ी है कोऑर्डिनेट करो एक दूसरे से, और जो मॉक इंटरव्यू, जो आपका जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो कर लो, ठीक है। थोड़ी बहुत आइडिया तो आपको आ जाएगी उससे, तो ये प्रैक्टिस कंपलसरी करना है आपको, ठीक है। ठीक है गाइस, तो हम लोग आज के लिए फिर यहाँ पे रुकते हैं। मैं कॉल करता हूँ मॉर्निंग वालों को एक एक को, ठीक है। ओके. Okay, sir. Yes. ओके सर.